wait ତମକୁ Yes, କୁହାଯିବ sir. wait କର So mic on କରିବେନି? ହଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଏବେ ମାଇକ୍ ଅନ୍ ଥିବ ନା ଆରେ ମାଇକ୍ ତ ଯୋଉ ଅନ୍ ନଥିଲେ ଶୁଭିବ କେମିତି ଆମକୁ Yes, sir. Yes, sir. ଓକେ Yes, sir. ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର Good evening, sir. Good evening to all my friends. My name is Subrat Maurana. I am from Denkanal, Bhuban, and I'm pursuing my diploma in electrical engineering in Government Polytechnic, Bhubaneswar. And I want to tell something about the SMPS, and I have prepared a PPT about SMPS, which is stands for the switch mode power supply. Uh, so here it is. Uh, first we have to first we um, you have to something learn about the SMPS. First, the objectives are the objectives of what is SMPS, then origin of SMPS, then the classification of SMPS, then applications of SMPS, then the future scope, what are the future scope of the SMPS, and the advantages, disadvantages of the SMPS, and then conclusion. So, first of all, what is SMPS? SMPS stands for switch mode power supply, and the SMPS are an extraordinary array of the frequency alternative, high frequency alternative, and these switching regulators of the high efficiency that step up and step down and invert the voltage regulation. Then the circuit diagram of the SMPS. Uh, here the such switching devices are included in the SMPS. First of all, we have to input supply given to the rectifier and filter. Then the rectifier is directly connected to the chopper, and then the chopper is directly connected to the output transformer, and the output transformer is also directly connected to the rectifier and the filter, and then the filter is directly connected to the output of the entire system. Then the chopper controller, which is connected as shown in the figure, which is connected to the chopper, and then this circuit diagram is known as the inter circuit is SMPS. Origin of the SMPS. The origin of the SMPS is the origin of the SMPS of the switch mode converters are linked with the developments in inverter circuitry, and an inverter is a processor of the generating AC from the DC, and is therefore a constituent of some forms of switched mode power supplies. Then the classification of SMPS. The classification of SMPS is based upon the type of the input and the output waveforms. AC to AC rectifier, DC to DC voltage converter, or is also known as the current converter. Then the DC to DC converter, then DC to AC inverter, and the AC to AC frequency changer, or also called as cycloconverter. Then the applications of SMPS. There are some applications which are used in SMPS, which is used in SMPS. The switch mode power supplies in domestic products such as personal computers often have universal inputs, meaning that inputs meaning that they can accept power from most mains supplies throughout the world, and with rated frequency of 50 hertz to 60 hertz, and the voltage of
100 volt to 240 volt. And the compact examples are the compact fluorescent lamps use a form of boost converter to generate the required 1200 volt ignition and the 600 volt sustained operation from the mains. In the future scope of SMPS, the future scope of the SMPS are the most commercial switch mode power supplies in the market today operate in the 10 kilohertz to 50 kilohertz. And there is now growing trend in research works and new power supply designs in increasing the switching frequencies and upwards to 100 kilohertz and above. Then the pros and cons of the SMPS, or it also can be told as advantages and disadvantages of the SMPS. The following are the advantages of SMPS, which are the power loss is reduced. Uh, it is high efficiency in nature due to the frequency transformer. The size and weight is significantly reduced. It is also less sensitive. And the following are the disadvantages of SMPS. First of all, the output triple is high, the regulation is low, worse. The regulation is worse, and the SMPS is noisy in nature. At the last, the conclusion. The conclusion is the switching mode power supply is a power supply that provides the power supply function through the loss components such as capacitors, inductors, and transformers, etc. And the use of switches that are in one of the two states, on or off. Thank you, sir. ଓକେ ବଟ୍ ତମେ ଯୋଉଟା କହିଲ ନା ସେ ଯୋଉ ସର୍କିଟ ଟାକୁ ନେଲ ଯୋଉ ସର୍କିଟ ଟା ଥିଲା ସେଇ ସର୍କିଟ ଟାକୁ ନିଅ ସେ Yes, sir. ସର୍କିଟ ଟାକୁ ଓଡିଆରେ ବୁଝାଅ ଓଡିଆରେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା କହୁଛ ସର୍କିଟ ଟାକୁ ଓଡିଆରେ ବୁଝାଅ ଆଉ ତମ ଫ୍ୟୁଚର ସ୍କୋପ ଟା ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଓଡିଆରେ ବୁଝାଅ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। Yes, sir. Okay? Yes, sir. Sir, ଆମେ ଯେତେବେଳେ sir rectifier ଟା convert करे AC to DC, DC power. Then ଆପଣ ଯେତେବେଳେ input ଆମେ AC power ଦିଆଯିବ rectifier को, rectify କଲା ପରେ ସେ AC to DC rectify କରିବ। DC rectify କଲା ପରେ ଚପର କୁ ଦେବ input ଟା ଚପର input ଆସିଲା ପରେ ଚପର DC to DC convert କରିବ। Then the DC supply is connected to the transformer. Then the transformer output is then the transformer connect ହେଇଥିବ rectifier ସହିତ. So rectifier also the transformer. Then the supply is connected to the DC output. Then the chopper control କରିବ କି sir ଯେତେବେଳେ output ଟା ଆସୁଛି sir DC output ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି chopper ଟା ତ DC convert କରିବ ସେଥିପାଇଁ sir connected to the controller ସେତିକି ତ। Anyone having any question? କର ପଚାର ଓଡିଆରେ ପଚାର। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେତିକି ମାନେ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲା ଅଛ ଜାଣିପାରିଲ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାର ତାକୁ କହିବ ନା ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ତ କହିବେ ନା ସେତିକି Yes, sir. ପଚାର। ଚପର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? So chopper
चॉपर तो सर डीसी पावर को डीसी पावर ही कन्वर्ट करियो सर। सर फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी, फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी। हेलो सर, फिक्स ओके डीसी टू सो वेरिएबल डीसी। हाँ यस 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 ओके सो थैंक यू सुब्रत। थैंक यू सर। जाऊ तेल समस्त खुशी लगिला तो गोटे गोटे थम देदेल देखिया गोटे गोटे थम दे दियो समस्ते तम माने बड़ भाईटे हैला से ट्राए कले सेतिक होची भलो कथा हैला ट्राए करिवार अछि पिला तो मुंह खोलु नांती मुंह खोलियो पड़ियो भाई तुम मानको सर एक्चुअली गोटे क्वेश्चन अछि करो क्वेश्चन अछि तो करो सर मु तो कहूची से सर टी सर्किट डायग्राम रे देखेबी हाँ सर्किट डायग्राम सुब्रत यस सर यस। प्लीज गो टू सर्किट डायग्राम यस सर चॉपर रो जो चॉपर आ से आउटपुट ट्रांसफार्मर लागि जी चॉपर हमर आउटपुट कोन होची डीसी रहउची ना हाँ डीसी वेरिएबल डीसी रोचे। वेरी गुड हमें ट्रांसफार्मर ए जो ट्रांसफार्मर रे हमें तो डीसी देई परिबानी वेरिएबल डीसी दे परियोनी कहेंगे दे होबो तो काहे कि ट्रांसफार्मर वेरिएबल डीसी दो ट्रांसफॉर्मर तो गोटे स्टैटिक डिवाइस ना से हाँ। केवल तार केवल हम एसी सप्लाई देला परे वेरिएबल डीसी से सेटा काम करिवो एसी रे काम करिवोनी। हाँ तो जदि भी हमें वेरिएबल डीसी देले ताले हमर रेक्टिफायर आउटपुट तो हमें ट्रांसफार्मर रे देई परिया रेक्टिफायर जेतो हमर पल्सेटिंग डीसी रहउची पल्सेटिंग डीसी रोचे हाँ किमते हमें तो एसी सप्लाई तो से माने पल्सेटिंग डीसी कन्वर्ट करिवो सेटा किछि नाही जे मु कहले कि चॉपर जेतले फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी कन्वर्ट करछि तेतले ट्रांसफार्मर ता तो कनेक्टेड अछि ना ट्रांसफार्मर ता नहीं नहीं जेतले एक्चुअली सर आपण चॉपर और रेक्टिफायर भितर हमर इकोनॉमिकल कोडा रहउची चॉपर रोचे चॉपर रे तो सर केम चॉपर टा केमति इकोनॉमिकल रहला सर गोटे रेक्टिफायर जस्ट ए मिनिट 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 चंद्रशेखर से माने Yes, sir. तमरी अरे तमरी जूनियर पिला माने से माने हैला से माने सार के जी डाके ना ताको पचारो डायरेक्टली हैला तुम सार डाकले असुविधा अछि रे हाँ सो Continue, चॉपर continue, और रेक्टिफायर हाँ चॉपर और रेक्टिफायर टा को कन्वर्ट करना हमें चॉपर करछे यस सर आगो नहीं नहीं आगो हाँ ताले ठीक अछि ताले चॉपर टा हमें कमे लगेले हेटा तो हमें रेक्टिफायर भी लगै पारथांदे तो तुम चॉपर ताले चाहो पल्सेटिंग डीसी पाई इकोनॉमिक तो हबन ताले चॉपर तो इकोनॉमिकल नो ऑब्वियसली जो जिंसटा आगो बाहरची तापर तार इया आसिला ना हाँ हाँ आगो तो रेक्टिफायर आसिला तापर चॉपर आसिला तो आमे जो मझरे ट्रांसफार्मर लगे जे डायरेक्ट आगुरु रेक्टिफायर फिल्टरटा लगे दै थाते तापरे चॉपर रो किछ हमर तो यूज होइनो ताता जदि एटा आपण जो लगे जंदी चॉपर सर तार किछ थिबो बोली यूज आपण एटा लगे जन ना सेटा तो काई किछ आपण कहू ना ठीक से मन नहीं बोधे मोर ओके ठीक अछि ओके एनीवन का को आंसर आसीबो ए क्वेश्चन नो सुनुचो समस्त बसिकी ए क्वेश्चन आंसर का को आसीबो एनीवन किछ भी आईडिया कार एटा स्टार्टिंग मोड यार किछ भी को चॉपर जो फ्रीक्वेंसी टा बढ़ुଛି କି तुब्रो डिस्कशन करो कोन Yes, sir. कहउचंती बा सब सिपा कोन कहउचंती सुबु आउ थरे को जे जा कहउतलो आउ थरे को सुबिया सर मु कहउଥିଲି हाँ हाँ एबे सुबिला चॉपर जो माने फ्रीक्वेंसी टा इंक्रीज होଉଛି କି ମାନେ ମାନେ कोन फ्रीक्वेंसी
frequency constant roche. सर चपरटा हमें हाई पावर एप्लीकेशन यूज करछन सर. पावर अधिक थिले यूज करि हबो हां चपरटा. चपरटा मेनली हाई पावर एप्लीकेशन हाई चपरटा पावर यूज. हां ଏ ସୁଦର୍ଶୀ କହିଛି ସେପଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦିଆରେ ସେପଟ ମାନେ କ'ଣ ସେପଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ କ'ଣ ସେପଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ ବୋଲେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସହିତ କ'ଣ ହେଇପାରେ କରେଣ୍ଟ କରେ ବଟ୍ ଏଫ୍ ନଟ୍ ଟର୍ମଟା ମନେ ପଡୁଛି କି ନାଇଁ ସେ ଏଫ୍ ନଟ୍ଟା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁ बुले दियो मोबाइल टाको बुले दियो पूरा देखा जीवन एमती बुले दियो ताको प्ले कर दियो हां ताको प्ले करो बस स्टार्ट करो. First of all, my name is Vilasini Kisan. I'm student of the Utkalmani UGI Institute of Engineering, Raulkela. My seminar topic is electrical safety for home. First, we know the electricity. What is electricity? What is conductor? What is insulator? First, conductor contain many free electrons such as gold, copper, silver, aluminum, etc. And insulator contain few free electrons, usually non-metallic materials such as wood, copper, glass, etc. Now you know the electric shock. When the human body become part of the current flow path, the result can be pain sensible, burn injury, loss of functioning of heart. We know the electric current is very dangerous for our human body. Current 1 milliampere effect on human body, slight tingling sensation. 2 to 9 milliampere small shock is we sense small shock. 10 to 24 milliampere muscles contract causing you to freeze. जस्ट ए मिनिट नर्वस हुओनी बारंबार कुआ होची नर्वस हुओनी हला गोटे गोटे जो सेंटेंस को न ताको ओडिया रे कन्वर्ट कर दियो बेटर हो आउरी ओडिया रे बुझी दियो समस्त तो ओडिया पिला अछंती हला नर्वस हुओनी. Yes sir. आउ आमे जेते बेले 25 रु 25 to 74 मिली एम्पियर जदि हम बॉडी रे फ्लो करिवो तो आमे our respiratory muscles can become paralyzed and you feel pain, exist, burn often visible. 75 milliampere to 300 milliampere usually fatal. Ventricular fibrillations entire and exist on visible. Greater than 300 milliampere almost death certain. If survive, will have badly burn organ and probability repair amputation. Some we prefer electrical safety tips while purchasing by only standard electrical equipment. आमे जेते बेले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किनिबा सेते बेले आमे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किनिबा. The supply cord should be in good condition, free from cut or damaged insulations. We always use 3-pin plug in the equipment and connect them to 3-pin socket only. Always check the rated voltage, current and the operating time of your equipment and ensure that these are not exist. Protect equipment against humidity. Always keep the rotating electrical equipment like table fan
out of reach of children and pets. Before repairing a lamp or handling fan, make sure the supply is always switched off. Only a qualified person or licensed electrician should be allowed to carry out repair. Amateurs have no place in this field. The main switch should be provided at a place easily accessible to put off supply in case of an emergency. Use LCB with main switch and as shock guard. LCB stands earth leakage circuit breaker. We, we always used correct size and quality of fuse wire for replacement. Switch off switch off mains when you go on vacation. Treat all circuit as live unless it is confirmed after testing to be dead. ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସାର୍କିଟ କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଡେଡ୍ ବୋଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିବାନି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ସାର୍କିଟ କୁ ଆମେ ଲାଇଭ ବୋଲି ଭାବିବା. Never be overconfident while dealing with electricity. Do not insert wire directly into the plug socket without a matching plug pin to use any electrical appliance when for temporary basis. Do not touch any bare wire, it may be live. Do not make any temporary joint in the wiring, especially without proper insulation. Do not connect a fuse in the neutral circuit. Do not use any appliance without proper earthing. Do not overload the wire by using multiple appliances from a single 5 ampere plug socket. Do not replace fuse unless the fault is detected and rectified. Do not provide higher size fuse wire than the prescribed size. Do not use wet hand to switch on and switch off the electricity. Do not plug in lamp or appliance with the switch on. Some electric then we see some electrical safety precaution. Do not touch the water or the other metallic container when the immersion heater is on. Do not clean electrical switches, board, etc. with wet cloth. Do not touch the TV antenna without disconnecting the TV receiver from the circuit. You may get a shock due to feedback. Do not join flexible cord by twisting the wire and taping them together. Do not run flexible cord or wires under mat, carpet or touching doorway where they may get crossed. Do not remove the wire mesh guard of a table or pedestal fan. Do not place cloth, paper or other combustible material near an electrical appliance when it is in use. It is advisable to carry out extensive safety audit of the housing complex to identify and eliminate hazard or detect at an early stage. It's all about my topic, sir. Thank you. Okay, anyone? Kichi question? Pocharo?
ସ୍ଲାଇଡ ଟା ଓପନ କରିଥାଅ ସେ ପଚାରିବେ क्वेश्चन एनीवन ये भी क्वेश्चन किछि पचारिबो पचारो अच्छा क्वेश्चन पचारनो ଆଉ कोन हेलो तो सहज टॉपिक हां यस स्टार्ट हो इलेक्ट्रिकल हाजार्ड सर कहले से हेलो सर ऑडिबल हां यस 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 पिलासिनी रेस्पोंड करो Yes, yes. हां 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 इलेक्ट्रिकल हाजार्ड जो कहले को कैसे इलेक्ट्रिकल हाजार्ड कहले ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଆମର 3 ପିନ୍ ଆମର ବେଶୀ ବେଶୀ ରେଟିଂ ର ଯଦି ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ୟୁଜ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ 3 ପିନ୍ ସକେଟ ୟୁଜ କରିବା ଯେ ଆର୍ଥିଂ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଥିଂ ତ ଆମର ସେଇଥିରେ ହାଜାର ହେଇପାରିବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ୱେଟ୍ ଓଦା ହାତରେ ଆମେ ଯଦି ସୁଇଚ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିବା ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସକ୍ ଲାଗିପାରେ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଫ୍ୟାନ ହଉ କି କିଛି ରୋଟେଟିଂ ଡିଭାଇସ ହଉ ସେଇଟା ସବୁ ଆମର ଛୁଆ ମାନଙ୍କରୁ କି ଆମର ଯୋଉ ପଶୁ ଯୋଉ ପାଳୁଛୁ ଆମେ ପେଟ୍ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା କଥା ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ତାର ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ତଳେ ମ୍ୟାଟ ତଳେ ନିଅନ୍ତି ଯୋଉ ସେମିତିଟା ବି ନେବା କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ସେଇଠି ମାଡ଼ିକି ସେଇଟା ଯଦି ଇନ୍ସୁଲେସନ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିରେ ବି ଆମର ସକ୍ ଲାଗିପାରେ ପିପି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ପିପି ସେଫ୍ଟି ଯାଉଛି ସାର୍ କ୍ରିଟିକାଲ ସେଫ୍ଟି ଗୋଟେ ପିପି ପିପି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା सेटा भी हम यूज करिया ना पीपी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सेटा जाउची हमरो हैंड तो ସେଇଟା ତ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ୟୁଜ କରିବା ଆମେ ତ ହେଲମେଟ ଗ୍ଲୋଭସ ଜୋତା ଘରେ ସେଇଟା ୟୁଜ କରିପାରିବାନି ନା अच्छा ठीक है थैंक यू थैंक यू ओके ଆଉ କିଛି ଆଉ हेलो କିଏ हेलो हेलो ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୋଟେ ୟୁଜ କଲ ELCB ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମର ELCB ୟୁଜ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ବଢିଆ लैपटॉप रे दबो तो बढ़िया हबो आउरी ठीक अछि हेलो सर गुड इवनिंग ओके स्क्रीन रो स्क्रीन टाको ये करो बास बढ़िया लैपटॉप रे दबो तो बढ़िया हबो स्क्रीन टाको ये करो जूम करो स्लाइड फुल स्क्रीन करो स्लाइड शो जाओ यस सर हाँ से एठी अछि हाँ फ्रॉम बिगिनिंग मारो सेटा को यस सर मारो आसुनी की फ्रॉम बिगिनिंग मारो कहीं आसिनी कहीं पर्यंत आसीबा कथा ना फुल स्लाइड टा देखा हबो फुल स्लाइड तो राइट साइड रे सर कॉर्नर रे थियो हाँ ना कॉर्नर भी अच्छी एटा तो से तो एटी अच्छी ना हाँ सेटा को मारो क्लिक करो फ्रॉम बिगिनिंग सर कोडी असुविधा कोन हाँ फ्रॉम बिगिनिंग टा मारो नॉलेज काम करो होम को चलो लैपटॉप लैग होची बोधे तमरो होम को चलो सर नेटवर्क स्लो छ नेटवर्क स्लो बस तो सेतर किछि संबंध नाही तो लैपटॉप लैग हो तो होम को चलो नले आउ थरे काटी के जॉइन करो मैं जो ये करो काटी दियो सेटा को आउ थरे ओपन करो काटी दियो आउ थरे ओपन करो सेटा हां आउ थरे ओपन करो स्क्रीन शेयरिंग थाउ आउ थरे ओपन करो सेटा को खाली करो ओपन करो सर अबे हां एटा आइला ठीक बस स्टार्ट करो गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग ऑल my name is Subhaprakash Sahu. I'm from Government Polytechnic Moirabhanj. My seminar topic is hydropower plant.
those are my today's topic. First of all, introduction. What is hydroelectric power plant we discuss, and aim of hydroelectric power plant, construction and part of hydroelectric power plant, working of hydropower plant, advantages of the hydropower plant and disadvantages of hydropower plant. Introduction. Basically, in our introduction page, we are discussed what is hydroelectric power plant. A generating station which utilizes the potential energy of water at a high level for the generation of electrical energy is known as a hydroelectric power plant. Basically, our hydropower basically aim is water energy, kinetic energy like water to convert electrical energy. A hydroelectric power plant compares a set of faculties and electromechanical equipment used to transform water's potential energy into electrical energy. In India, 197 hydroelectric power plants, where 7 plants in our Odisha. There are Balimela hydroelectric project, Hirakud hydroelectric project, Diplima hydroelectric project, Rengali hydroelectric project, Uppor Kolab hydroelectric project, Uppor Indravati hydroelectric project, and last Machkund hydroelectric project. Those are the pictures of our hydroelectric power plant in our Odisha. And our next topic is basically aim. What is the aim of our hydroelectric power plant? Basically, we use our hydroelectric power plant. It is a clean and non-polluting source of energy. No fuel is required. Only water is the source of energy, and it does not consume water. Basically, other power plants like thermal power plant or nuclear power plant pollute our environment. And our hydroelectric plant is water, working by the water. Hydroelectric power plants are the most efficient means of producing electric energy. The efficiency of today's hydroelectric power plant is about 90%. To control the environment pollution by which they are produced by the other power plants like nuclear and thermal power plants, provide source of energy and for fluid control. Basically, our hydroelectric and parts, trash track, gate, penstock, generator, transformer, transmission line, outlet, discharge. The trash track basically काम एटा कि हम पाले भी हमें जानते जो बहुत आवर्जना थाए जेटा कि ट्राश रैक हमको अटकी थाए एंड से हम टर्बाइन भीतर को जीवा पाई दिएन गेट द्वारा हम पानी एंटर रही थाए पेनस्ट्रोक द्वारा पेनस्ट्रोक गोटे भाल्व टाइप रा जेटा कि हमर टर्बाइन को पानी हमको से कंटिन्यूस दे थाए जनरेटर हमें बेसिकली अल्टरनेटर यूज करता हूं और बेसिकली हम अल्टरनेटर पैरेलल यूज करता हूं फॉर जनरेशन पाई जेटा कि 11 के भी हमरो जनरेशन करता है बाय द हेल्प ऑफ हमें स्टेप अप करू हम पावर को 11 के भी फास्ट जनरेट होता है जेटा कि हम स्टेप अप करू जा फल रे हम लॉसेस कम होता है और ट्रांसमिशन लाइन माध्यम रे हमें पावर टाको जेटा कि हम जनरेट करलु से पावर टाको हमें ट्रांसमिट करता हूं एंड आउटलेट साहाय्य आउटलेट भाल्व साहाय्य आमर जी आमर पानी यूटिलाइज हो सारा व्यवहार कर सारा आम जनरेशन कर सारू से आउटलेट भाल्व साहाय्य से आउट होता है डिस्चार्ज होता है नेक्स्ट देखते हैं कि वर्किंग और हाइड्रोलिक पावर प्लांट इनटेक भाल्व थ्रो जेटा स्टोर होता है पानीटा हम इनटेक भाल्व थ्रो से एंटर करता है पेनस्ट्रोक साहाय्य आम टर्बाइन को जाए बेसिकली आम पेनस्ट्रोक टर्बाइन या कापलाइन टर्बाइन आम यूज करता हूँ अल्टरनेटर को जाए टर्बाइन साहाय्य आम 50 हर्ट्ज सप्लाई जो आम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में 50 हर्ट्ज सप्लाई दरकार से आम कंटिन्यू सप्लाई आम ऑल्सो गवर्नर यूज करता हूँ एंड पानी कंटिन्यूस आम पेनस्ट्रोक टर्बाइन द्वारा ही जाए जेटा कि 11 के भी आम जनरेट करता है देन वन्स एटा पानी आमर थरे टर्बाइन
अल्टरनेटर को गला परे आमे पावर हाउस माध्यम जेडी हमर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सब लागी थे पावर हाउस माध्यम आमे 11 केवी पावर टाको स्टेप अप करिकी 132 या ताठारु अधिका पावर को आमे स्टेप अप करि थाउ जो माध्यम आमे पुनी ट्रांसमिशन लाइन माध्यम आमे पावर टाको 1.2 अनदर पॉइंट या सब स्टेशन या many electrical places industry basically substation को जाए then electrical industry like industry गुड़ा को जाए then outlet valve through रे हमर होचु पांटा बाहर को जेटा यूटिलाइज हे था जे पांटा से पांटा बाहर को बारता है आ सेटा होचु ड्राफ्ट ट्यूब माध्यम रे बारता है और टॉलरेंस रे हमर जति की कचरा मचरा जति पानला था सेठी अलगा स्टोर करा रहते पुनी अगेन ए पांटा को जते बळे हमर कम प्रेशर थाए आमे पांटा को आउथरे भी आमे यूज करि परबा advantages of hydroelectric power plant this plant is free from of pollution maintenance cost is less it has no standby losses unit cost power is less the plant has longer service life no fuel is required no change in efficiency with the age disadvantages of hydroelectric power plant we know हमर जति भी किछि भी जिंस होइता किछि तार एडवांटेजेस थाए एंड किछि डिसएडवांटेजेस थाए पहिले दी पार्श्व भली हेड टेल भली किछि एडवांटेजेस तार भी थाए किछि डिसएडवांटेजेस थाए देन हमें डिस्कस करबा डिसएडवांटेजेस द इनिशियल कॉस्ट ऑफ डैम एंड प्लांट इज वेरी हाई हमें जते बळे हमरो कॉस्ट हमें जते हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट तैयारी करिबा ता कॉस्ट हमरो बहुत हाई थाए काना हमें बहुत किछि इटा बाली लाइक कंस्ट्रक्शन जिंस बहुत यूज होइता से पय हमरो कॉस्ट बहुत हाई थाए उलगा प्लांट तुलना the availability of power from it is not much reliable low losses of forest creates environment problems due to evaporation considerable water is lost time required for construction of hydroelectric project is more thank you sir that's all about me sir anyone having any question Pacharo yes sir Pacharo hello Surya Prakash I am Raja from UCB Engineering College Barampur ପଚାର ରହିଲ କାହିଁକି hello Surya Prakash ହଁ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାର ଶୁଭା ଯାଉଛି ପଚାର anyone ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଁ ପଚାର 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 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ ଆମେ ଅଡିବୁଲ sir ମୋର ଭଏସ ଆସୁନି କି yes yes ନାଇଁ ତମର ଭଏସ ଆସୁନାହିଁ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମୋର ହଉଛି କି ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟା ଫ୍ଲୋଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଭଏସ ଆସୁନି ଭଏସ ଆସୁନି ଶୁଭ ପ୍ରକାଶ ଭଏସ ଆସୁନାହିଁ ତମର hello sir ତମ ଭଏସ ଆସୁନାହିଁ ଭଏସ ଆସୁନାହିଁ ଠିକ ସେ ओके ठीक ଅଛି ତମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ଟା ଅଫ୍ କରିଦିଅ ତାପରେ ଆସିବ ଠିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ଅଫ୍ କର।
स्क्रीन शेयरটা অফ করে দিও শুভপ্রকাশ। ইজ ইট অডিবল অর নট? ওকে, ଏବେ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭପ୍ରକାଶ, କଟିଗଲା ବୋଧେ। क्या हुआ? of conductors we use, and then the conclusion. So, what is our overhead transmission line? An overhead power line is a structure used in electric power transmission and distribution to transmit electrical energy across large distances. इट मीन्स कि हम लोग जो एक ओवरहेड पावर लाइन वो होता है जो हम लोग का एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन जो हम लोग का लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कंडक्टर्स यूज होते हैं, मतलब ट्रांसमिशन के लिए जो कंडक्टर्स यूज होते हैं उसको हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं. So it consists of more uninsulated electric cables suspended by towers or pole. Overhead means zameen ke upar. We have to keep in point sag, ground clearance, and many more things for that. So there are 5 types of conductors used in overhead transmission line: solid conductor, standard conductor, or we can call it all aluminium conductor, double AC. And third one is aluminium conductor steel reinforced ACSR, which is one of the best conductor to use for overhead transmission line. Means it is basically commonly used. Then the fourth one is all aluminium alloyed conductor, triple AC, and the fifth one is hollow conductor. First, coming to the conductor, that is solid conductor. As you can see in the picture, it is a solid conductor. Solid conductors are constructed of one single metal of piece, and it have low power rating. And it is flexible in nature, and it is tough and difficult to transport for larger power system. So ये basically overhead transmission line में जल्दी use नहीं होता, and it is mainly used in grounding purpose or earthing purpose. Secondly, we have standard conductors or all aluminium conductors, that is double AC. ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर जैसे उसका नाम बता रहा है वो पूरा एल्यूमिनियम का बना होगा, मतलब उसमें जो स्ट्रैंड्स होंगे वो सारे एल्यूमिनियम वायर होंगे. वो आपका ज्यादातर अर्बन एरियाज में यूज होता है जहाँ पे हम लोग को सप्लाई मतलब हम लोग को जो सपोर्ट चाहिए वो ज्यादा दूर मतलब ज्यादा पास होते हैं. लाइक वहाँ पे पोल्स यूज होते हैं, सीमेंट पोल्स, उसमें हम लोग ज्यादातर डबल AC कंडक्टर यूज करते हैं. अर्बन एरियाज नहीं, रूरल एरियाज में. अर्बन एरियाज में हम लोग का ज्यादातर पोल यूज होता है जैसे कि स्टील पोल. लोकेलिटीज में छोटे छोटे उसमें हम लोग डबल AC यूज करते हैं. वो हम लोग का हर एक स्ट्रैंड हम लोग का सॉलिड कंडक्टर स्मॉलर क्रॉस सेक्शन से बना रहता है और उसका हाईलेस टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है. सो इस वजह से हम लोग का उसमें मोर सैग होता है और फिर उसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी हम लोग का कम हो जाता है. इस रीजन से हम लोग ज्यादातर इसे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज जल्दी नहीं करते हैं, बट हम लोग अर्बन एरियाज में यूज करते हैं. फिर हम लोग का ये वही बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में यूज नहीं होता है. और अगर इसमें ये चीज है पॉइंट कि वो उसका सैग और ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से, मतलब ज्यादा होने की वजह से हम लोग सैग ज्यादा होता है एंड ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है. तो उस रीजन से हम लोग का इसमें हाइट इंक्रीज करना पड़ता है और स्पैन लेंथ भी हम लोग को इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है. तो इस रीजन से ये हम लोग का इकोनॉमिकल नहीं है, इट इज अनइकोनॉमिकल टू यूज. फिर हम लोग का थर्ड में आता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड ACSR. जैसे मैंने कहा था, इट इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड कंडक्टर यूज्ड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन. मींस कि ये हम लोग का इनडायरेक्टली बेस्ट है यूज करने के लिए क्योंकि इट हैव हाई कैपेसिटी और इसका हाई स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है. ACSR जैसे उसमें नाम है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स. स्टील मतलब ये हुआ कि हमारे सारे मतलब उसमें जो कंडक्टर्स रहेंगे, एक जो बीच का मेटल जो बीच का वायर रहेगा वो स्टील रहता है. इट इज बेसिकली प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मतलब कि वो हम लोग का उस पॉइंट पे
वो मेटल हम लोग को वो कंडक्टर को कैरी करने का स्ट्रेंथ देता है, स्टील मेटल। फिर उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है, तो वो हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन में यूज रहता है। और फिर हम लोग का उससे स्किन इफेक्ट भी रिड्यूस होता है, और वो क्या हैव मिनिमम नेग्लिजिबल। और फिर वो स्टील कंडक्टर जो है वो मिनिमम ये होता है, वेयर मैक्सिमम कंडक्टर फ्लोस, मतलब कि स्टील कंडक्टर जो होता है वो हम लोग का फ्लो में कुछ इतना सपोर्ट नहीं करता है, जिसमें एल्यूमिनियम जो उसके अगल बगल में रेनफोर्स्ड होता है वो कंडक्ट करता है, एंड स्टील आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर हम लोग का ACSR इनडायरेक्टली स्किन इफेक्ट रिड्यूस करता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। फिर आता है ऑल एल्यूमिनियम एलॉयड कंडक्टर, दैट इज नोन एज ट्रिपल AC। जैसा फिगर में देख रहे हैं वो ACSR से मिलता जुलता है, बट उसमें डिफरेंस ये होता है कि ऑल एल्यूमिनियम एलॉयड कंडक्टर्स में एल्यूमिनियम जो होता है वो एलॉय होता है कंडक्टर, मतलब एलॉय होता है आपका, एलॉय होता है, एलॉय मिक्स, वी कैन कॉल इट एलॉय मिक्स। फिर वो लाइट वेट होता है एंड उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ACSR जैसा। फिर वो लेस सैग देता है और मोर ग्राउंड क्लियरेंस देता है, और वो लार्ज स्पैन लेंथ एप्लीकेशन इन हायर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता है, जहाँ पे स्पैन लेंथ आपका ज्यादा हो, एक पोल से दूसरे पोल तक जो आपका स्पैन लेंथ आता है उसको हम स्पैन लेंथ बोलते हैं, वो आपका ज्यादा हो, वहां पे यूज होता है। फिर आपका वो बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता है। फिर ट्रिपल AC आप लोग का फ्लाई ओवर क्रॉसिंग में आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन जो कुछ रिवर्स क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें जो ब्रिजेस बने रहते हैं उसमें जो पोल्स में जो कंडक्टर यूज होते हैं वो एक्सेप्शनली ऑल एल्यूमिनियम एलॉयड कंडक्टर ही होते हैं, और हिली एरियाज में होते हैं ताकि हम लोग का वो टावर को स्टेबिलाईज कर सके। फिर आता है हम लोग का हॉलो कंडक्टर्स। हॉलो कंडक्टर्स आपका हॉलो नाम से ही पता चलता है कि वो कंडक्टर हॉलो होगा। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं वो कंडक्टर है जिसमें एक बीच में हॉलो पाथ है। तो आपका इसमें ये आपका हॉलो सिलेंडर जो होता है उसके अंदर जो कंडक्टर होता है उसमें कोई मटेरियल नहीं होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है उस मटेरियल के अंदर, तो मतलब इनसाइड द कंडक्टर, और उसका डायमीटर लार्ज होता है। उसके बाद वो ज्यादातर आपका बस बार में यूज होता है। एंड हॉलो सिलेंडर आपका फ्लो ऑफ चार्ज को परमिट करता है थ्रू अ सेंट्रल चैनल, तो उसे इसीलिए हॉलो कंडक्टर बोलते हैं। सॉरी, इट्स हॉलो कंडक्टर। समरी यही हुआ हमारा कि ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने 5 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स देखे जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं। तो थैंक यू सर। Okay. What is the name of iron pole? Sir? What is the name of iron pole? Iron pole. ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ହବ ହେଲା, ପାଟି ଖୋଲ, ପାଟି ନ ଖୋଲେ ହବନି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର, ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କଣ ଜାଣିନ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବି ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହଉଥିଲା, ସେଇଠି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଓକେ।